Welcome back, my dear friends and my dear students to my channel. आज हम लोग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते क्या हैं एक्चुअली? दे आर आइडेंटिफायर्स एंड ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द आइडेंटिफायर? It is a token. So variable and constants are the part of the token. But what is variable? Variables are the named labels whose values can be used and processed during the program. It is an identifier whose value can change. ये वो आइडेंटिफायर है जिनकी वैल्यू को हमेशा चेंज किया जा सकता है. Variables points to the memory location where the value is stored. प्लीज़ इस पॉइंट को समझो कि वेरिएबल पॉइंट्स टू द मेमोरी लोकेशंस हुज वैल्यू इज वेयर द वैल्यू इज स्टोर्ड. जहाँ पर आपका कोई वैल्यू स्टोर है, जिस मेमोरी लोकेशन पे, उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करता है हमारा वेरिएबल. देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स. Variables always start with a small capital letter and the underscore. We can use the special symbol. Only the special symbol is the underscore, and it is used in the beginning or in the middle also. No special symbol other than the underscore is allowed in naming variables. It is a case sensitive and there will be no space while giving the name to the variable. And one more thing, no keywords will be used as a variable. And the variable name must be unique. The two variables of the same name is not allowed. Name should be unique. A variable is not created until some value is assigned to it. Until some value is assigned to it. Otherwise, it will create the error. And the name of the error is name error. यहाँ तक समझ में आई बात कि अगर हम किसी वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें वहाँ पर उसकी वैल्यू भी असाइन करनी होगी. अदरवाइज इट विल क्रिएट अ नेम एरर. ठीक है. एंड व्हाट इज वेरिएबल असाइनमेंट? We can use the assignment statement to create a new variables. Variables must be assigned values before it is used in the program. Because the interpreter use only the value of the variable. ऐसा क्यों है कि हमें पहले वैल्यू असाइन करना पड़ता है? वैसा इसलिए है कि इंटरप्रेटर सिर्फ वेरिएबल का वैल्यू को यूज़ करता है. एंड while assigning value to the variable, we can do the multiple assignment, assigning values to multiple variables like a equal to b equal to c equal to 10. What does it mean? It means 10 is assigned to variable a, 10 is assigned to variable b, 10 is assigned to variable c. In a single statement, 3 variables are created with the value 10. And there are other ways also to assign the value to the variables in the multiple assignment that I will discuss in the practical classes. Next one is the constant. What is a constant? It is also an identifier whose value cannot be changed throughout the execution of the program. But there are no constants in Python. Python में constant ऐसा कुछ नहीं होता है. In Python, it is not possible to define the constant whose value cannot be changed. But in Python,
The constants are defined on a modular level and written in capital letter only. कांस्टेंट को हमेशा हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे with underscores separating words. Underscores can be used while writing the constant. और इसको हम किस तरह से मॉड्यूलर लेवल पे हमको यूज़ करना है, ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में समझेंगे जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो के बाद हम प्रैक्टिकली आई विल शो यू ऑन द लैपटॉप ऑन माय स्क्रीन, so that will make you more and more comfortable with these chapters. Till then, bye.